Hello students, here I'm Gargi Pawar, Assistant Professor BBA in St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurgaon. So here I'm back with an online lecture series on company account subject. So let's start with lecture. In today's lecture, we are going to cover some topics from your from third unit of your syllabus. So first topic that we are going to cover is Accounting Standard 4 and second is Accounting Standard 5. So these two topics we are going to cover in today's lecture, today's video. So let's start with lecture. Yes, first Accounting Standard 4. The name of Accounting Standard 4 is Contingency and Events Occurring After Balance Sheet Date. So first of all, let's see the introduction of the Accounting Standard 4. This accounting standard deals with contingency and events occurring after the balance sheet date. So this accounting standard deals with the contingency and event occurring after the balance sheet date. So what do you understand by contingency and what do you understand by events occurring after the balance sheet date? So let's see. Following contingencies have been excluded in the view of, first let's see the meaning of contingency. So first of all, the meaning of contingency means, a contingency means a situation or a condition, the eventually outcome of which gain or loss can be determined as ascertained only on occurrence or known occurrence of one or more uncertain future events. So basically, what is the contingency? Let's take an example. See, if there is an event that may be occur or may not be occur, and due to occurrence or known occurrence, your profit or loss of your business is affected. जैसे एक कोई एग्रीकल्चर बिजनेस है, किसी पर्सन का कोई एग्रीकल्चर बिजनेस है, कोई एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस है, तो फ्यूचर में बारिश होगी या नहीं होगी, इसकी वजह से उसका प्रॉफिट या लॉस इम्पैक्ट होगा. अगर बारिश होगी तो उसको प्रॉफिट होगा और बारिश नहीं होगी तो उसको लॉस होगा. तो बेसिकली कंटिंजेंसीज आर द सिचुएशन due to occurrence or known occurrence of which the profit or loss of the enterprises get affected. Okay. So contingency means the situation or condition, the eventual outcomes of which gain or loss. कोई ऐसी सिचुएशन और कंडीशन जिसका आउटकम गेन और लॉस होगा, या तो गेन होगा जिसकी वजह से एंटरप्राइजेस को, या तो लॉस होगा. कैन बी डिटरमाइंड टू ascertain only the occurrence or known occurrence of one or more uncertain future events. तो वो डिपेंड करेगा किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स के अकर और नॉन अकरेंस. ओके, सो दिस इज अबाउट कंटिंजेंसी. So this accounting standard reads that how will we take in consideration the contingency. तो contingency को हम कैसे consideration में लेंगे, क्या हमको contingencies को record करना चाहिए या effect of contingencies को record नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में deal करेगा accounting standard. Okay. So following contingencies have been excluded in the view of a special consideration applicable to this. तो इन कंटिंजेंसी को हमको कंसिडरेशन में नहीं लेना है. दैट मींस इन कंटिंजेंसी का अगर लॉस और गेन पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो भी हमको इसको कंसिडरेशन में नहीं लेना. कौन सी है ऐसी कंटिंजेंसीज? लायबिलिटीज ऑफ लाइफ एश्योरेंस इन जनरल इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस अराइजिंग फ्रॉम द पॉलिसी, ऑब्लिगेशन अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान एंड कमिटमेंट अराइजिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट्स. तो contingencies which are occur due to these events will not be considered, and their impact will not be considered in the P&L account. Okay, so accounting standard 4 इन तीन contingency को exclude करता है, अदर सभी contingencies पे deal करेगा accounting standard 4. Okay, now see, in other words, the meaning of contingency, in other words, such events may or may not occur. First condition, such event may occur or may not be occur. Second, outcome of such event is not known on the date of balance sheet. The second condition for being a contingency, that the outcome of such event is not known on the date of balance sheet. When you are preparing the balance sheet, then such contingencies is not known. Such contingency is not known. That event is not known. जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो आपको नहीं पता है कि आगे बारिश होगी या नहीं. Okay. The next, estimation of such outcomes are required to be determined. So you have to determine the estimation of such outcome. आपको बारिश होगी तो उससे क्या प्रॉफिट हो जाएगा और क्या लॉसेस होंगे, उसका एस्टिमेशन आपको करना पड़ेगा according to AS4. And such
estimation needs to be stated in the balance sheet. तो अगर आपको इसका कोई estimation है कि इसके वजह से इतना प्रॉफिट या इतना लॉसेस हो सकता है, तो आपको वो बैलेंस शीट में मेंशन करना चाहिए, बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना चाहिए. Not in the amount is not mandatory to show in balance sheet liability side और asset side. तो आपको बैलेंस शीट में इसका इम्पैक्ट को, अमाउंट के इम्पैक्ट को दिखाना जरूरी नहीं है, बट आपको एक डिस्क्लोजर मेंशन करना चाहिए, एक नोट मेंशन करना चाहिए कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है. Okay? So if you have the estimation, you have the estimated amount, then you can mention it in P&L or balance sheet. But you are not able to estimate the amount, then आपको एक नोट में एक नोट लगा के लिखना कि ऐसी कंटिंजेंसी अगर हो सकती है, इसकी वजह से ये लॉस या ये प्रॉफिट हो सकता है, सो दैट आपके जो P&L है और बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए. ओके, so this is the contingencies. So the contingency means the situation or conditions because the occurrence or non-occurrence of which the gains and loss of a company or a enterprises may affect it. Okay? So ऐसी contingencies का estimation आपको पहले से करना चाहिए और उसको अपनी बैलेंस शीट में disclose करना चाहिए. So basically the what is the heading of the accounting standard? Contingencies and events occurring after the balance sheet. तो ऐसी कोई कंटिंजेंसी है जो आपके बैलेंस शीट की डेट के बाद अकर होती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? दिस इज अ डील अंडर द दैट इज डील अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोड के अंदर इसको डील किया जाएगा. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन. इवेंट्स कैन बी कंसीडर्ड एज कंटिंजेंसी. Contingencies are nothing but certain favorable or unfavorable events which can taken or occur between the balance sheet date and date on which such financial statements are approved by the board of directors in the case of company and by the corresponding approving authority in the case of other entities. So let's see. Yes, let's see. These contingencies may be फेवरेबल और अनफेवरेबल. हो सकता है बारिश होने की वजह से या कोई भी कंटिजेंसी अकर होने की वजह से आपको उसका फेवरेबल इवेंट भी हो सकता है, वो अनफेवरेबल, उसका फायदा भी आपको हो सकता है, उसका नुकसान भी आपको हो सकता है. It not be necessary that contingency is always favorable or a contingency is always unfavorable. So it may be favorable and unfavorable also. See, what happened? जनरली देखिए क्या होता है कि जैसे बैलेंस शीट और P&L बनाने का, as you all know, कि 31st मार्च इज द लास्ट डेट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ P&L और बैलेंस शीट और P&L हमेशा 31st मार्च तक की बनाई जाती है. फॉर्म बोल सकते हैं 31st मार्च की डेट के लिए, पीरियड के लिए बैलेंस शीट और P&L बनाया जाता है. लेकिन होता क्या एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि लाइक 31st मार्च तक कभी भी आपका कोई P&L या बैलेंस शीट रेडी नहीं होता है, क्योंकि 31st मार्च तक के डेट तक पीरियड तक का आपका बैलेंस शीट और P&L बन रहा है. तो आप 31st मार्च तक तो वेट करोगे कि सारे एक्सपेंसेस आपके आ जाए, सारे इनकम्स आपके आ जाए, सारे एसेट्स आपके आ जाए, सारी लायबिलिटीज आपके आ जाए. तो 31st मार्च तक तो आप वेट करोगे, और 31st मार्च तक तो आप ट्रांजेक्शन होने का वेट कर रहे हो. देन क्या आप एक दिन में ही विद इन वन डे विद इन ऑन 31st मार्च का P&L और बैलेंस शीट बना दोगे? इट इज नॉट पॉसिबल समवेयर. तो जनरली ऐसा होता है कि पीरियड तो 31st मार्च तक होते हैं, बट P&L और जो बैलेंस शीट आपकी बनती है एक महीने बाद तक, लाइक 31st अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर और ऑफ द सेम ईयर, 30th अप्रैल ऑफ द सेम ईयर, सॉरी 30th अप्रैल ऑफ दैट ईयर, या फिर 1st जून तक बनती है, 30 जुलाई तक बनती है, 31st जुलाई तक आपकी बैलेंस शीट और P&L प्रिपेयर है. सो अगर ऐसा कोई इवेंट है जो बैलेंस शीट डेट से और जब स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल आया बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द केस ऑफ कंपनी एंड इन अदर देन द एंटिटी ऑफ कंपनी, द कॉरेस्पॉन्डिंग अप्रूवल अथॉरिटी, जो भी आपकी अप्रूविंग अथॉरिटी है, उनसे जब आपका अप्रूवल आया मींस 31st मार्च तक की डेट, और सपोज आपका अप्रूवल आना है, आपकी P&L और बैलेंस शीट आपकी बननी है 31st जुलाई तक. तो अगर कोई ऐसी कंटिजेंसी है, कुछ ऐसा इवेंट है जो 31st मार्च से, और आपकी बैलेंस शीट कब बननी है, P&L कब बना है, 31st अगस्त, तो 31st मार्च से 31st जुलाई के बीच, सॉरी इफ वी अज्यूम कि 31st जुलाई तक आपकी बैलेंस शीट और P&L बन के तैयार होने वाला है, तो 31st मार्च से 31st जुलाई तक जो भी आपके इवेंट्स अकर हुए हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो आपको आगे पढ़ना है.
basically the contingencies are nothing but favorable or unfavorable events which take place or occur between the balance sheet date and the date of which the such financial are approved. Okay, so that means from 31st March to 31st July, in between these period, if any contingencies occur, it may be favorable or unfavorable, then what will be the. So following two type of event can be identified. Situation which provide further evidence of condition that exists at the balance sheet date, and situation which are investigate of condition that arose after the balance sheet date. So these events may be like this if such event exists at the date of balance sheet and such events are not exist at the time of balance sheet. Okay, there may be both the two conditions. तो आपकी जो ये कंटीजेंसी होगी ये या तो ऐसी हो सकती है जो आपकी बैलेंस शीट के डेट पे आपको थोड़ा सा तो आइडिया था कि ऐसा हो सकता है, कुछ एविडेंस है आपके पास, और कुछ ऐसी हो सकती है जिसका आपके पास कोई एविडेंस नहीं था कि आपको बैलेंस शीट की डेट तक कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया या फर्दर वो चीज अकर हुई तो आपको पता चला बैलेंस शीट डेट के बाद में आपको पता चला कि ऐसा कोई इवेंट अकर। तो दीज टू कंडीशन में भी आइडेंटिफाई। ओके, नाउ अकाउंटिंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कंटीजेंसी लॉस। तो अगर हमारे पास कोई कंटीजेंसी होती है उसकी वजह से हमको कोई लॉस अकर होता है, कोई कंटीजेंसी अकर होने की वजह से लॉस लॉस होता है किसी एंटरप्राइजेस को, देन व्हाट विल बी द अकाउंटिंग। तो सी if the expected outcome, that is contingent loss, is likely, then it's prudent to provide for that loss in the financial statement. Let's have an example. Let's understand this example. A company has filed a case against another company for 22 lakhs. According to the legal team, the chances of recovery are nil. Thus, as per the AS4, the company should make the provision for doubtful debts. तो see, आपने कोई केस फाइल करा हुआ है किसी दूसरी कंपनी पे फॉर ₹20 lakhs. नाउ एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट डेट आपको लीगल टीम ने बता दिया कि इसके चांसेस निल है, तो आपको थोड़ा सा कुछ एस्टिमेशन था इसका, आपको पता था, इसका थोड़ा आइडिया था आपको, क्योंकि आपकी लीगल टीम ने आपको बता दिया कि इसकी रिकवरी के चांसेस निल। ओके, तो इसके रिकवरी के चांसेस निल है, ये आपको पहले से पता था, ये आइडिया आपको पहले से था, तो आपको इसके लिए एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना चाहिए। तो ऐसी जो भी कंडीशन होगी विच इज द फर्स्ट सिचुएशन in which you have still little evidence or you have idea that these events or contingency may occur at the time of balance sheet date, you have little idea, you have evidence for the same contingency that may be occur or not occur. So you have to prepare, you have to be prepared for that, you have to be prepared provision for that if you have little idea for that. But if you are not have any idea at the time date of balance sheet, then what will be the accounting treatment? In the case where it is not possible to estimate the amount of loss in view of insufficient or conflicting evidence, then disclosure is made on the existence of nature of the contingency. तो अगर आपको पहले से आपको पता है कि ऐसा हो सकता है, देन तो आपको अपने P&L में उसका प्रोविजन बना के रखना। और अगर आपको बैलेंस शीट डेट पे यू हैव नो आइडिया दैट इट मे बी अकर, इफ द सिचुएशन मे बी अकर लाइक if after balance sheet date after 31st March you face an accident that is lost by fire, so on the date of balance sheet you have no idea about that there may be any loss due to fire or due to theft or due to flood or anything else. So in that case you have to only disclose the amount because देखिए 31st March को आपका डेट की बैलेंस शीट है। ओके, नाउ आपका जो ये इवेंट अकर हुआ, सपोज एक इवेंट एक एक्सीडेंट यू फेस एन एक्सीडेंट दैट इज लॉस बाय फायर, तो इन दैट केस ये लॉस बाय फायर हुआ आपका कब, सपोज 1st May को आपको लॉस बाय फायर हुआ और आपकी बैलेंस शीट बन कब रही है, तैयार कब हो रही है, बन के 31st July तक। ओके, तो उस पीरियड के बीच में जो आपका बैलेंस शीट की डेट है दैट इज 31st March और 31st July, इस डेट के बीच में 1st May को फायर अकर हो गई है, फायर लग गई है आपके गोडाउन में। तो इन दैट केस वो लॉस को आपको बैलेंस शीट की डेट पे पता नहीं था, इसलिए आप प्रोविजन तो बना नहीं सकते उसके लिए। देन क्या आप क्या करेंगे, आपको शो तो करना पड़ेगा कि लॉस बाय फायर हुआ है, तो आप क्या करेंगे, एक नोट बना देंगे और उसमें डिस्क्लोज कर देंगे कि हमको इतनी डेट को हमको फायर अकर हुई है, फायर लगी है हमारे बिजनेस में जिसकी वजह से हमको इतना लॉस हुआ है। तो कंटिजेंसी लॉसेस में भी 2 टाइप कि आपको बैलेंस शीट की डेट तो पता हो
और एक बैलेंस शीट की डेट पे आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं, बैलेंस शीट की डेट पे आपको थोड़ा आइडिया हो कि ऐसा हो सकता है, हुआ नहीं अभी तक बट आपको आइडिया है कि ऐसा हो सकता है, देन इन दैट केस you have to make provision in P&L account and you have to be prepared for that situation. Okay, but in the case where there is no idea, you have no idea, you have no evidence, then in that case only disclosure is required in the balance sheet. Okay. Okay. Now, the existence and the amount of guarantee obligation arising for discounted bills of exchange and similar obligation undertaken by an enterprises are generally disclosed in financial statement as way of not even through the possibility of loss of enterprises will occur is removed. Yes. तो अगर आपकी कोई इवेंट ऐसा है जिसका आपको आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है और जो रिमूव है जिसका मटेरियल कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जैसे सपोज कोई लॉस आपको होने वाला है वो 200 रुपीज को 1000 रुपीज, तो दैट इज नॉट द मटेरियल लॉस, तो उनको आपको डिस्क्लोज करने का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो ऐसी कोई अगर सिचुएशन होती है जो मटेरियल नहीं है, ऐसी कोई कंटिजेंसी लॉस है जो मटेरियल नहीं है, सिर्फ 100 रुपीज का लॉस है, सिर्फ 1000 रुपीज का लॉस है, सिर्फ 5000 रुपीज का लॉस है, तो वो मटेरियल नहीं है आपके लिए, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज। Provision for contingency are not made in the respect of general or unspecified business rates since they do not relate to conditions or situation existing at the balance sheet date. तो सेम चीज कि आपके बैलेंस शीट डेट पे अगर कोई रिस्क आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपको सिर्फ एक नोट बनाना पड़ेगा, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसके लिए कोई प्रोविजन आपको बनाने की जरूरत है। ओके, नाउ व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंटिजेंसी गेन? See, contingent gains are not recognized in the financial statement because their recognition may result in the recognition of revenue which may never be realized. And however, when the realization of gain is virtually certain, then such gain is not contingency and accounting for gain is appropriate. Okay. So, see, if any contingent gain, then you are not required to recognize in financial statement because the certainty of realization is not there. तो आपको कोई भी सर्टेनिटी नहीं है कि ऐसी इनकम आपको रिसीव होगी या नहीं होगी इन फ्यूचर, तो आपको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं, रिकॉग्नाइज करने की जरूरत मतलब आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको लिखने की जरूरत नहीं। However, if the realization of gain is virtual certain, अगर कुछ सर्टेनिटी है, then such gain is not contingency. अगर आपको सर्टेनिटी ही है तो वो कंटिजेंसी होगा ही नहीं और उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, तो अकाउंटिंग फॉर गेन इज एप्रोप्रिएट, तो फिर आपको अकाउंटिंग, अगर आपको सर्टेनिटी है कि वो रिसीव होगा, देन you have to accounting for that gain. If you have no certainty that these gain will be received or not, so you are not required to record that income. Okay, so there is a rule of there is a principle of conservation. तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन अप्रोच, जो भी आपको फ्यूचर में गेन्स होने वाले हैं उनको आपको रिकॉर्ड नहीं करना, बट जो फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं उसको आपको रिकॉर्ड करना है, उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना है। तो जो भी कंटिजेंसी गेन है, मतलब इन फ्यूचर आपको जो भी इनकम होने वाली है उसको आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। दिस इज द रूल ऑफ कंजर्वेशन, दिस इज द रूल ऑफ कंजर्वेशन, दिस इज द वन ऑफ द रूल ऑफ अकाउंट। ओके, तो कंजर्वेशन अप्रोच आपका बोलता है कि जो फ्यूचर में आपको इनकम होने वाली है उसको आपको रियलाइज नहीं, आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, बट फ्यूचर में जो लॉसेस होने वाले हैं उसको फेस करने के लिए आपको रेडी रहना है, इसलिए उसके लिए आपको पहले से प्रोविजन बना के रखना है, उसको रिकॉर्ड करके रखना है। ओके, तो इनकम जो कंटिजेंट गेन होगा उसको आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, इवन कंटिजेंसी लॉस होगा अगर वो बैलेंस शीट डेट पे है, आपको पता है उसका कुछ एविडेंस है, एस्टिमेशन है कि ऐसा हो सकता है, तो आपको रिकॉर्ड करना है। अदरवाइज अगर कोई भी एविडेंस नहीं है आपके पास, तो जब भी वो होता है बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बीच में अगर वो अकर होता है, तो आपको सिर्फ एक डिस्क्लोजर नोट बनाना है, बैलेंस शीट में नोट बनाना है बैलेंस शीट के नीचे, और उसमें शो कर देना डिस्क्लोज कर। Now, accounting treatment of contingent gains. So, we have already discussed, sorry. Now, determination of contingency amount. Now, how will you determine the contingency amount? So for this, see, the estimation of the outcome of amount of contingency is determined by the management of the enterprises, taking into consideration the information available in the date of the which financial statement are approved.
तो आपको अकाउंट का जो आपके जो कंटिजेंसी अमाउंट है उसका एस्टिमेशन कौन करेगा, मैनेजमेंट। किस बेसिस पे, जो भी आपको एविडेंसेस अवेलेबल है, जो भी इंफॉर्मेशन टिल द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास है, आपको उसके बेसिस पे मैनेजमेंट क्या करेगा, आपके अमाउंट ऑफ कंटिजेंसी डिटरमाइन करेगा। ओके। Situations arising after the balance sheet date which indicate that the asset might have been impaired or liability may have exist at the balance sheet date are taken into account for the process of identifying the amount of contingency. If you have evidence that these assets and liabilities may be occurred, then in that case, on the basis of those estimates, you have to determine the management will determine the amount of contingency. Okay. A contingency may arise on account of legal claim against the company. The progress of such legal claim on the day of financial statement are approved can be decided factor of estimating the amount of contingency. The opinion of the legal experts or other advisor, experience of other enterprises in similar situation also taken into account in estimating the amount of contingency. So, if there is a case of legal claim which you have filed against any other company, then in that case you have to calculate the amount of the to estimate the amount of the contingency. You can take the help of the legal experts or other advisor or experience of other enterprises which also file the case against that company. So you can take these measures to determine the contingency amount. Okay. Now there is another term that is events occurring after the balance sheet. Okay. So you can see the name of the accounting standard code is contingency in event occurring after the balance sheet date. So we have talked about contingency already. Now we will talk the events occurring after balance sheet date. So let's see what is the meaning by events occurring after the balance sheet date. So situation which is arise after the balance sheet date and before the date on which financial statement are approved might affect the amount of assets and liability of the enterprises. तो जो ये वाले जो कंटिजेंसी थे ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट कर रहे थे, जबकि इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट किस पर इफेक्ट कर रहे हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। तो ऐसी सिचुएशंस और ऐसी कंडीशंस व्हिच अफेक्ट द assets and liability of the enterprises. So that events that occur after the balance sheet date between the after the balance sheet date and before the approval of the financial statement. Okay. So if any situation fall under this period and that affect the assets and liabilities of enterprises, that will be known as events occurring after the balance sheet date. Now, events that is occurring after the balance sheet date may be non-existing events and existing events. So, what is the meaning by non-existing and existing events? कुछ इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो नॉन एग्जिस्टिंग नेचर के हैं, जिनको एग्जिस्ट करने की नीड नहीं है पी&एल और बैलेंस शीट में, और सीधा सीधा उनको डिस्क्लोजर कर देना है, एक नोट बना के उनके बारे में बता देना है। कुछ आपके इवेंट्स ऐसे होंगे जो आपके एडजस्टिंग इवेंट्स में आएंगे, जिनको एडजस्ट करना मैंडेटरी है। तो कौन से ऐसे इवेंट्स होंगे जो नॉन एडजस्टिंग होंगे, कौन से इवेंट्स ऐसे होंगे जो एडजस्टिंग होंगे, जिनको एडजस्ट करना चाहिए, और कौन से इवेंट्स ऐसे हैं जिनको जो नॉन एडजस्टिंग नेचर के, so adjustment is not required. In some of the cases adjustment are required. So see, a fire in a factory after balance sheet date does not provide any evidence of the condition that exists on the date of balance sheet, hence it is a non-existing event. So if on the date of balance sheet you have no evidence or no clue of any contingency or event, then in that case such event is non-existing event nature and you are not required to adjust in balance sheet or P&L, and you can show them as a note below the balance sheet. Okay, तो ऐसे events को adjust करने के लिए भी सिर्फ balance sheet के नीचे नोट डाल के आप लिख दीजिए, we face the loss by Saron, we face that. Okay, now what about existing events? In contrast, the bank debtors who declares bankruptcy after the balance sheet may be considered as a existing event. So there is an example. Say if there is a debtor of your company or your of a enterprises, there is a debtor of an enterprises, and आपको पहले से ये आइडिया है कि डेटर बैंक्रप्सी के प्रोसेस में चल रहा है,
इंसॉल्वेंट होने के प्रोसेस में चल रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट डे you have the proper evidence that this data is going to be a bankruptcy, or this data is in the process of insolvency or bankruptcy. So in that case, you have the proper evidence at the time of balance sheet. So you have to make adjustment for these events. Okay, that disclosure से काम नहीं चलेगा इस इवेंट में. इस टाइप के इवेंट में आपको एडजस्टमेंट करना, you have to do adjustment at the same time. Okay, such events might mean the requirement of adjustment or disclosure. तो इस टाइप की एडजस्टमेंट को आपको एडजस्ट करना है, और नॉन एडजस्टिंग वालों को आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है. Okay, now what are the disclosure requirements of AS4? See, disclosure requirement applies only in case of event which affect the financial statement of the enterprise in the substantial manner. Disclosure requirement applies only in the case of events which affect the financial statement of the enterprise in substantial manner. तो आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट उन्हीं फाइनेंशियल टर्म्स की पड़ेगी जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन फ्यूचर भी इफेक्ट करने वाले हैं, आपके फ्यूचर मतलब मटेरियल नेचर के. अगर कोई इवेंट्स और कंटिंजेंसी ऐसी है जो मटेरियल नेचर की है, तो उन्हीं का डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता है. ऐसे जो मटेरियल नहीं है बिजनेस के लिए, उनका रिक्वायरमेंट नीडेड. In an event where the contingent clause is not provided for, its nature and effect on the financial statement is disclosed by way of a loan. ऐसे contingency laws जो material nature के नहीं है, जिनको clause is not provided for the nature and effect on the financial statement, जो financial statement को affect नहीं करते हैं, उनका disclosure requirement नहीं. If the occurrence of the contingency is remote, it is generally ignored. ऐसी कंटिंजेंसी जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, जो रिमोट नेचर का है, उनको हमको जनरली इग्नोर कर देना चाहिए. उनका कोई भी डिस्क्लोजर और कोई भी प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं. When such an event which needs disclosure occurs, information regarding of nature of event, the estimation of its effect on the financial statement, and statement that such an estimate cannot be made and mentioned in the report. When such an event which needs disclosure occurs, information regarding of the nature of event, the estimation of its effects on financial statement, and statement that such an estimate cannot be made and mentioned in report. So what this line want to say? Let me read once again. When such an event which needs disclosure occurs, okay, information regarding the nature of event, the estimation of its effect on the financial statement, or statement that such an estimate cannot be made mentioned. Okay, so you have to mention that at the time of balance sheet, at the time of preparation of financial statement, if you have the estimation of that event, then you have clearly mentioned that we have the estimation of that event, or that's why we are preparing for the provision for that same event. Okay, और अगर आपको information नहीं है, you have no information about that event or that contingency, then you have clearly mentioned that at the time of balance sheet and that at the time of P&L, we have no information, we have no clue, we have not any estimation of these events or these contingencies. Okay, yes. So I think that's it for today, because अगर मैं अभी आपको AS5 भी कवर करवाने लगी तो दोनों बहुत मैशअप हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ सिमिलर हैं. So for today's lecture, this is that's it for today. So thank you guys.